Hello, my dear viewers. Welcome you all to Scorpio class Hindi. In today's video, I have brought complete notes of chapter Internet Kranti from class 10th Karnataka board. Explanation of the same I have already uploaded. You can take the link from the description box. Now, let us see the first main. एक वाक्य में उत्तर लिखिए means answer in one sentence. First one, इंटरनेट का अर्थ क्या है? What is the meaning of internet? Answer, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. What it is? Internet is a network that connects many interconnected network of computers. Okay, internet is a network that connects many interconnected network of computers. Second one, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? What can be sent through internet banking? Answer, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से कितनी भी रकम भेजी जा सकती है. Through internet banking, any number of amount can be sent from any corner of the world. Okay, internet banking. With the help of internet banking, you can send any number of amount from any corner of the world. Then next one, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? By what progressive nations are trying to bring changes? Answer, प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. So progressive nations are trying to bring changes through e-governance. Okay, now the next one, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? What are the areas where internet has contributed? Answer, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का योगदान है. So internet has contributed in many fields like in countries' defense team, medicine, agriculture, science, space knowledge, education, etc. So everywhere internet has occupied. Then next is internet क्रांति का असर किस पर पड़ा है? Who has been affected by internet revolution? Answer is, इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी पर पड़ा है. So internet revolution has affected almost everyone, not only elders but children are also badly affected by internet revolution. Okay, then next question, ITES का विस्तृत रूप क्या है? What is the full form of ITES? Answer is, ITES का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबिल्ड सर्विस है. Full form is information technology enabled service. Okay, enabled service. Then next main is 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. Answer in 2 to 3 sentences. First question is, इंटरनेट का मतलब क्या है? What is internet or what is the meaning of internet? Answer is, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. यह आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. So what is internet? Internet is a network that connects many interconnected networks of countless or many computers. Okay, and it has become an important part of our modern life. Yes, today we are so dependent on internet that we cannot think to survive without it, and that's true. Now the next question, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? How does internet help in business and banking? Answer, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से काफी मदद मिलती है. जैसे घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कितनी भी रकम भेज सकते हैं. So internet, it helps a lot in business and banking. Like one can shop from home, that is we can purchase online,
and we can even pay the bill sitting at home, and also can send any amount to any corner of the world. So internet has made our life very easy. Then next question is e-governance क्या है? What is e-governance? Answer: e-governance द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है. So e-governance, through e-governance, all the details of government works, records, orders, everything are passed to the people, which makes the administration transparent. Transparent means everything is made clear to the public. Nothing is kept hidden. So whatever rules, regulation, laws, order are made by the government, everything is passed on to the public. So it becomes transparent. Everything is clear to the public. There is no doubt and there is no confusion among them. Okay, so this is the benefit of e-governance. Then next main is 4-6 वाक्यों में लिखिए. Answer in 4 to 6 sentences. First question is संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? What is the importance of internet in the field of communication and information? So आंसर इज संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा महत्व है. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना खर्च किए कोई भी चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. पूरे पुस्तक को कम समय में भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. So here internet has a great importance in the field of communication and information. How? See, we can send any picture or video without spending huge amount and time to any corner of the world. And we can also send the whole book in no time through PDF. Whole book, whole textbook or any book, any information, you can send it through PDF. It has become very easy. And internet has become an important part of our life, and without it the field of communication and information will come to an end. We are so dependent on internet that if it stops, then life will be stopped. Like that it is. Yes. Now the second question is video conference के बारे में लिखिए. Write about video conference. What is video conference? Answer: वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर कई देशों के लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं. So what is video conference? In video conference, you can sit in one place and exchange your views, ideas with people from many countries. You don't have to travel to every place. You can sit in your home or at any place you can sit and you can exchange your views and ideas with any number of people. Okay, and you can watch the members on screen with whom you're talking. So it is quite easy to speak with people who are staying far from us. Okay. Then next question is social networking एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? Social networking is a revolutionary discovery. How? That you have to explain. Answer: सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया के लोगों को एक साथ बांधा है. इसके कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इस साइट के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, खान पान, कला, संस्कृति की जानकारी मिलती है. So yes, social networking is a revolutionary discovery. Why? Because that has brought the people of world together. It has united, it has brought the people of the world together, and it has many sites like Facebook, Orkut, Twitter, LinkedIn, etc. And with the help of these sites, we come to know about people who stay in other places, like their lifestyle, tradition, culture, art,
food, etc. Everything we come to know about the people with the help of social networking. Okay. Then next question is, इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? What are the disadvantages or limitations of internet? So आंसर इज, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी है। इसकी वजह से बैंकिंग फ्रॉड, पायरेसी, हैकिंग बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग में बच्चे भी फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है। बच्चे अनावश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इंटरनेट को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। See, we all know the disadvantages of internet. No doubt, internet is a boon. It is a vardhan. But on the other side, it is a curse. It is abhishap. It has many drawbacks like banking fraud, piracy, hacking. What are these? See, hackers, what they do, they hack your ID and they come to know everything about your personal detail, and they can even transfer your amount from your account. They can transfer the money from your account. So these type of frauds are being done through hackers. And piracy and banking fraud, so many illegal activities are being done. They download videos illegally, so these type of frauds are being done, and it is increasing day by day. And we also have free websites, chatting, where children are trapped. There is also wastage of time, because when you are using net, time runs so fast, and if you are not using net for what it is supposed to be used, then really it is harmful. See, children, they are getting those information that they are not supposed to get. So parents should also be careful when they hand over their cell phones to kids. So these were the disadvantages of internet, and there are many more disadvantages if you see. So these are some of the disadvantages. Okay. Then next main is Anurupta. What is Anurupta? Here you have to see the relation in the first pair and you have to solve the second pair. See, the first one is computer, Sanganak Yantra, internet, Antarjal. If computer is a computer device, then internet is a network. It is Antarjal. Second one, IT, information technology. This is full form. Full form of IT is information technology. Then full form of ITES is information technology enabled service. Then third, Facebook, Vardhan, hacking, Abhishap. Facebook is a boon, hacking is a curse. Then next, video conference, Vichar Vinimay, e-prashasan, Pardarshikta. In video conference, you can exchange your views, ideas. And in e-governance, there is transparency, means there is clarity. Everything is opened to the public. There is nothing kept hidden. Okay. Then next main is जोड़कर लिखिए, means match the following. फर्स्ट इज, इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है. इट मीन्स दैट इंटरनेट हैज गिवन द वर्ल्ड द नेम ऑफ स्मॉल विलेज. सेकेंड इज, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकता है. थ्रू इंटरनेट एनीवन कैन पे द बिल. देन नेक्स्ट, इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट बून टू द सोसाइटी. देन नेक्स्ट इज, इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है. सी, पायरेसी, हैकिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ इंटरनेट. देन इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए. एवरीवन शुड बी केयरफुल विद इंटरनेट. सो दिस वाज द मैचअप. नाउ द नेक्स्ट मेन इज उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. हियर इन ब्रैकेट सम answers are given. You have to choose the right answer and write it. I have not written the bracket. You can take it from the textbook. Okay, directly answer I have given. So here first one is, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल है. इंटरनेट is a kind of worldwide computer network. Then second one, IT और ITES से अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है.
Because of IT and ITES, lot of people have got employment. रोजगार means employment. Then next, social networking के कई sites हैं. There are many sites of social networking. Then next, e-governance से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. By e-governance, administration becomes transparent. Okay, पारदर्शी means transparent. Then next, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. इंटरनेट इज रियली अ boon. वरदान मीन्स boon. देन देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. इंटरनेट प्लेस अ मेजर रोल इन द डिफेंस टीम ऑफ कंट्री. ओके, देन नेक्स्ट इज इंटरनेट एक और वरदान है तो वह अभिशाप भी है. इट मीन्स दैट इंटरनेट इज नॉट ओनली अ boon but it is also a curse. Abhishap means curse. It is also a curse. Then next main is Kannada या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. Here you have to translate either in Kannada or in English. Okay, I am translating in English. If you know Kannada and if you want to write in Kannada, you can. So here first one is इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. It means internet has become an important part of our modern life. Then second one is इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. It means through internet one can shop from home. Then next, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं. The problem of unemployment can be eradicated with the help of internet. Then next main is सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए. Here also answers are given in the bracket. You have to choose the right answer and write it. That you will get from your textbook. You can take it from there. बढ़ना घटना, स्थिर अस्थिर, मुमकिन नामुमकिन, वरदान अभिशाप, दुरुपयोग सदुपयोग, अनुपयुक्त उपयुक्त. Then next main is अन्य वचन रूप लिखिए. Here you have to write another word of it. पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे, किताब किताबें, जगह जगहे, कोशिश कोशिशें, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार रिश्तेदार, जानकारी जानकारियां, चिट्ठी चिट्ठियां, जीवन शैली जीवन शैलियां. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेन इज इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्ह का नाम लिखिए. Here you have to name the punctuation mark used in the sentence. Okay, what punctuation mark it is that you have to write. First one, आज का युग इंटरनेट युग है. Here what punctuation mark is there? You can see it is underlined. It is पूर्ण विराम. We call it as पूर्ण विराम. पूर्ण विराम. After every completion of a sentence, we put full stop. So this is full stop. Okay, पूर्ण विराम. Then second is internet का मतलब क्या है. Here question mark is used. So it is प्रश्नार्थक चिन्ह. We call it as प्रश्नार्थक चिन्ह. Then next, बड़ा अच्छा लगता है. Here exclamation mark is used. Yes, we call it as विस्मयादि बोधक चिन्ह. Then next is लोगों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. Here योजक चिन्ह is used. Okay, it is called योजक चिन्ह. Then next, हाँ हाँ दुष्परिणाम है. Here comma is used and we call it as अल्प विराम चिन्ह. Okay, so whatever punctuation mark is used, that we have to write. Then next main is वाक्यों का काल परिवर्तन करके लिखिए. Here you have to change the tense and write. First one, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है.
सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है भविष्य काल में. दिस सेंटेंस यू हैव टू चेंज इन फ्यूचर टेंस एंड राइट. ओके, सो इट विल बी सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा. पड़ेगा. ओके, भविष्य काल मीन्स पड़ेगा. इन भविष्य काल पड़ेगा विल कम. ओके, everyone will be affected by internet revolution. Then second one, रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. Here पाना चाहता था, it is given in भूतकाल. Okay, it is given in past tense and you have to change and write in वर्तमान काल. You have to change it and write in present tense. Okay, so how it will be? रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है. After changing in present tense, it will be रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है. Rohan wants to get detailed information. Then next one is रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा. Here it is written in future tense. You have to change and write in past tense. So how it will be? Rohan had asked a question to computer teacher. रोहन ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा था. Okay, so like this way you have to change the tense and write. Then next main is काल पहचान कर लिखिए. Here you have to identify the tense and write what tense it is used, that you have to identify and write. So first one is इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है. The scope of human thinking is expanding. So in which tense it is written? It is written in present tense, means वर्तमान काल. रहा है is used na, so it is in present tense, वर्तमान काल. Then second one is पिताजी ने रोहन को समझाया. This is written in past tense. Father explained to Rohan. This is in past tense. Then next is इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. Internet has become an important part of modern life. This is written in भूतकाल, means past tense. Then next is internet सचमुच एक वरदान है. Internet is really a boon. It is written in वर्तमान काल, in present tense. Then next one is e-governance से प्रशासन पारदर्शी बनेगा. This is written in भविष्य काल, means future tense. Okay, so here we have done with all the mains. Here all the mains I have completed, question answers, fill up, match up, everything. And if you want a detailed information about Kal, then you can watch my video where I have explained in detail everything about Kal. You can take the link from the description box. Okay, so if you like this video, hit the like button, share and subscribe it. Thank you. Till then, take care.